हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। एंड आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड द टॉपिक इज सॉक्रेटिस, राइट? So in the previous class what we have discussed is related to the introduction of Socrates and the background in which the Western philosophy came into existence, and he was the first person who laid the foundation for the Western philosophy. And we all know about the difference between the Socrates and his disciples, right? And उसके अलावा हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द सोक्रेटिक प्रॉब्लम, राइट? तो सोक्रेटिक प्रॉब्लम मींस व्हाट ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट और ट्राइंग टू अराइव एट आफ्टर ऑल द research and all the basically findings and all the reasoning, all the through with the help of the dialectic method, everything. So ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज सॉक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथड. So for many of the students this term is new, I know that, right? So epistemology is the word which can be asked as a 2 marker in your questions in your paper of the mains examination. And what you have to write in the epistemology, as you can see on the screen, I am directly starting the topic without even wasting a single second, because what we are here to do is to cover the syllabus according to the exam point of view and to help you clear the exam with good rank. Okay, so let's start. So epistemology is the word which means the branch of philosophy which is concerned with the knowledge. You will ask, sir, whole philosophy is related to knowledge? Yes, we are working on that. But what we are talking about, how that knowledge is defined and organized, is the part of one stream called as the epistemology, right? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विथ नॉलेज. सो इफ द 2 marker question comes in the examination, you need to answer the same statement you need to write in your answer in your copy. Clear? Chal, very good. Now what is the Socratic problem we are trying to discuss? Socratic problem we have discussed in the previous class, so I'm just briefing. The Socratic problem is also the part of the epistemology, because the term Socratic problem is defined within the overall domain of the knowledge of the Socratic philosophy. So when we use the term Socratic problem, which we have discussed in the previous class, if you have not watched it, just watch it right now. If you have any kind of doubt, you can just message me at our number, or you can just drop a comment. I will reply to that. तो सॉक्रेटिक प्रॉब्लम के बारे में हमने क्या पढ़ा इन द प्रीवियस क्लास? वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज द सर्च फॉर यूनिवर्सली वैलिड नॉलेज. इट इज द सर्च फॉर यूनिवर्सल वैलिड knowledge, and how that knowledge need to be arrived with the help of the ethical inquiry. And why this inquiry is ethical? Because our goal is to know what man is. Our goal is to achieve the happiness of individual. Our goal is to get to the point where we will feel the goodness of life, and there is nothing greater than happiness and goodness in life. That is the greatest benefit of the soul. So that is what we are talking about. Our inquiry is ethical because we are talking about the well-being of the individual. And why we are trying to arrive at the universal valid knowledge? Because we want to know what man is according to the Delphic inscription from which he got inspired, and he was trying to know what is self and know thyself. He wanted the answer to this. So he used what? He used the virtues and the concept of knowledge, and then the concept, and then the reason. And reason is a utopian concept. Reason is present everywhere, universal, and that's why universal availability of reason for in the mind of every human being leads to the term called as universally valid knowledge. That's what we have discussed yesterday, right? So some of you, if you are listening to this class the first time, may not find some linkings. So please watch my previous class, then you will understand what do you understand
And what do you mean by the word universally valid knowledge? That knowledge which is based on reason can only be called as universally valid, otherwise it will not be called like universally valid. और हमें ऐसे नॉलेज पे क्यों पहुंचना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी ह्यूमंस के लिए जो नॉलेज हम अराइव हो वो एप्लीकेबल हो, universal validity, and universal validity can only be ensured with the help of well reasoned and well organized concepts, right? Sir, what is the next question which we define within the scope of the epistemology? The next question you can see on the screen is Socratic knowledge. If some of you is getting confused or getting distracted by the vocabulary which I am using again and again, which may repel you, so I will just suggest you to be calm and composed and listen to me whatever I am saying. थोड़ा सा धीरज रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे. This topic cannot be digested instantly. It's not factual. It's very technical. It's very conceptual. And every philosopher has their own concepts, right? So once we study any geography or any science or economics, their concepts are like common for everybody. But यहाँ पे जैसे ही philosopher change होगा, उनके concepts भी change होंगे. Concepts का मतलब उनके words, उनकी meanings, what they assign to the particular word, how they put that particular concept within the whole frame of the philosophy, these things will change. So once we get hold of that, we get the hold of the complete philosophy. This is what you need to understand. So just be patient, be calm, and just listen. Don't panic. So knowledge must be universally valid. That, sir, I understood. But sir, what are the different branches or divisions or the topics on which we are defining this word knowledge? So knowledge related to justice, knowledge related to virtue, and knowledge related to eternal ideas. So these three are the basic domains. We have discussed that in the previous class, right? Justice means the universal valid knowledge of the state principles of the politics. Virtues means the universal valid knowledge related to the moral principles or the ethical principles. And eternal ideas means the universal valid knowledge related to the religious principles or the religion which is followed or whatever beliefs followed in a particular society of the Greece of that time, right? One more thing we have discussed in the previous class while discussing about the Socratic problem, I'm just revising, which is written here. Knowledge is innate. Someone asked the Socrates, sir, from where this knowledge is coming? Simply by asking, simply by reasoning, how can we arrive at particular knowledge? Why this knowledge is not coming from outside, instead it is coming from inside. So that's how they arrived to the conclusion. Yes, Socrates said, yes, my disciples, knowledge is innate and within us. Knowledge is within us. Just like the fire is dormant in the matchstick. जैसे आप माचिस जलाते हैं तो matchstick में fire dormant है, but as soon as you provide the friction and the temperature rises, phosphorus burns and the flame comes. So that fire or the flame is dormant. We only need the external stimulus or external friction and just to rekindle that fire. In the same way, the knowledge is innate in us, it is dormant in our mind, but we need reasoning, and that reasoning is like a friction which can rekindle the knowledge, and it is waiting to be recalled. It is waiting to be recalled. So what I have given you some analogy. एनालॉजी की हेल्प से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, लाइक अ मैचस्टिक एनालॉजी, कि कैसे नॉलेज हमारे अंदर इनेट है और हम इसको कैसे रिकिंडल कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं. तो सर ये सब तो ठीक है, बट ये रिपोजिटरी स्टोर कहां पर है? नॉलेज हमारे अंदर है, ये बात हम समझ गए, लेकिन ये स्टोर कहां पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस एंड देन द Socrates answers that it is stored in the soul. It is stored in the immortal soul. And that's how the Western philosopher Socrates first time using the concept of soul, talking about some internal inherent existence on which he has not talked much what are the characteristics of the soul, but he has called that inner permanent existence as the soul, in which there the inner innate knowledge as the permanent repository is always present. We are born, we live, we die.
Sometimes we are not even touched by the kindle of knowledge, by the flame of knowledge, but with the help of reason, we can examine our life, we can make it worth living, and we can manifest that knowledge. And once we manifest that knowledge, we can manifest that soul from within. So there are so many things which is written between the lines which you need to understand, and that's why my role comes into play in between. Suppose is a statement you read in a book or in a notes. Soul, this led to belief in the immortality of the soul, and soul as the repository of all knowledge from where it needs to be recalled. But what is the linkage? The linkage is that needs to be immortal, because knowledge is always innate. So even though I don't get the experience of knowledge in my whole life, that doesn't mean I didn't have the knowledge. It simply means I didn't ignite it. That's it. Right? So, sir, Socrates, sir, how can I recall, rekindle, ignite the flame of knowledge? So, Socrates said that it can be awakened through inductive reasoning and the universal validity. These are again a two marker question in itself. ध्यान देंगे इस बात का. These are the very important questions in the examination. How can the knowledge be recalled or awakened according to Socrates? Two marker. Because Socrates पे जो भी question आ रहा है, in the previous class we have discussed that it is mostly related to the Socratic ethics and the term virtue and the term knowledge. So knowledge related जितने भी aspects हैं आपका बहुत बढ़िया तैयार होना चाहिए, and I will help you in that. सो नॉलेज कैसे अवेकन किया जा सकता है, कैसे उसे जागृत किया जा सकता है, कैसे उसे रिकिंडल किया जा सकता है? तो आंसर इज इंडक्टिव रीजनिंग. What is inductive reasoning? When inductive reasoning comes, you question one layer, then you again question second layer, you again question second layer, you are going deeper and deeper and deeper. That is called as inductive reasoning. And then second is the deductive reasoning, then where the generalization happens. So when you do the analysis, that is inductive. When you do the synthesis, that is deductive. Again an analogy, right? ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको. When you do synthesis, that is deductive reasoning. When you do analysis, that is inductive reasoning. Simple as that. So when you go deeper and deeper and deeper while asking question, that is called as inductive reasoning. And why you are doing this inductive reasoning? To arrive at universal validity of that particular last knowledge, whether it is applicable in all the situations or not, whether it is applicable to all the human beings or not. That provides the universal validity. So these terms which we are talking about for last few minutes, these forms the overall structure of the epistemology, the whole knowledge structure of Socrates. And that's why you must understand the first term of the day, that is epistemology. That is the heading. Epistemology means the theory of knowledge, how that knowledge is organized, how that knowledge is structured, what are the key terms which forms the knowledge, how that knowledge can be gathered, how that knowledge can be awakened. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि how what is the process of gathering or arriving at the knowledge, then again the answer will be same which is written here. That answer would be inductive reasoning and the universal validity. Clear? Next point he says, what is the sharp distinction between, he made a sharp distinction between two approaches. In the previous class, when I ended the class, I said that there was a category of people who were called as sophists. There was a category of people called as the sophists, who were subjective, who were talking only about the benefit of any individual. And those sophists were like the nomads, intellectual nomads of that time. कहने का क्या मतलब है? Suppose ग्रीस की एक सिटी है एथेंस, यहाँ पे कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की कि सर हाउ कैन वी कन्विंस पीपल. सपोज अ किंग आस्क्ड समवन, जो काउंसलर्स होते थे उस टाइम के, राइट, जो नोबल्स होते थे उस टाइम के, वो सोफिस्ट होते थे, वो रेटोरिक्स करते थे. व्हाट डज इट मीन? रेटोरिक्स का मतलब होता है कि फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव, what is your goal, and then you continuously argue in that favor so that you can persuade the
bunch of people or the group of people in your favor. So if the king has decided to go for a war against a certain country or certain army or certain state, then he will simply do the rhetoric in front of the people so that people will support the king. So you need to garner the support of the people, you need to persuade the people. That is not a Socratic approach. That is not a Socratic approach, because in the Socratic approach, the end is not decided. Where you are going to achieve what would be the final argument, what will be the final knowledge in a particular shape would be. You only know that the final knowledge would be universally valid and well reasoned. That's it. It is not a rhetoric. So what is the function of sophist? As it is written here, the sophists are the people who were providing subjective reasoning, subjective perception. They first arrive at the final conclusion, and they then back project. He say anything which will support this final conclusion. So if king decides beforehand that he wants to go for a war in a particular situation, then he will only try to convince, just in the way the Hitler did before the Second World War. He convinced the complete German population that we need to clear this earth from the Jews. Right? The kind of racism he just spread all over the country. So that is what is the work of the sophist, and Socrates is totally against it. So sir, what was the approach of the Socrates? Socrates' approach was rational. Just keep that in mind. Socrates' approach was rational. Socratic approach was rational. ये एकदम मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है क्लास में, इसका आपके एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है. मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि whatever you are listening and seeing on the screen or reading or noting down, every statement is relevant for the exam. And any question can come from anything you can see on the screen. So be very, very aware and careful and attentive while listening to my class. Right? So what is the sharp distinction between the sophist and the Socrates? In the simple language, the Socrates approach was rational, which can lead to concepts, which forms the part of the knowledge, which will be universally valid. Right? So I'm speaking much, writing less. Why? Because I want you to develop understanding in your mind what these words basically means. Right? So suppose I'm talking about the rationality and the concept. We all know that where you want to arrive at the just the point we have mentioned above, that is the universal valid knowledge. For universal valid knowledge, you need conception. For conception, you need rationality, means well reasoned arguments, and that is the approach of the Socrates. Socrates ये नहीं बोलते पहले कि पहले से हमको ये मानना है और इसे हमें सिद्ध करना है, यानी we need to prove it. No, that is the back projection. You decide the final argument, a statement, and now you back project and starting कि वो सारे argument करो जिससे हम यहाँ तक पहुंच जाएं. No, this is not the approach of Socrates. Socrates simply sitting here and asking question deeper and deeper and deeper, and finally he wants you to arrive at the final argument on your own based on reason. And that reasoned argument will be universal valid because reason is common to all the human beings. तो अगर रीजन में कोई प्रॉब्लम है, रीजनिंग प्रोसेस में कोई इशू है, तो सॉक्रेटिस उसको करेक्ट कर देते थे कि नहीं, आपने जो रीजन किया ये गड़बड़ है, दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड. This was a very, very big responsibility on the part of the Socrates, and he took that. He took the responsibility of guiding the youth to reason in a right context. Right? So this was the difference in approach. So sophists were very subjective. वो पहले आते थे, किसी इंडिविजुअल से मिलते थे, इधर ही विल बी द किंग और सम एनी अदर पर्सन. दे वर लाइक इंटेलेक्चुअल नोमैड्स. ये बोलते थे हमारे पास स्किल है, हम आपको ट्रेन कर सकते हैं कि आप अपनी बात को कैसे परसुएड कर सकते हैं, कैसी बातों को रख सकते हैं लोगों के सामने, किस तरह से उस रेटोरिक स्पीच देने को सिखा सकते हैं. क्या सिखा सकते हैं? रेटोरिक स्पीच देना सिखा सकते हैं. रेटोरिक का मतलब होता है कि आप मंच से आप ही अकेले बोलेंगे. दैट विल नॉट बी अ डायलॉग, दैट विल बी अ मोनोलॉग. और
सामने वाले से सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की लैंग्वेज जो कभी कभी आप मोदी जी की स्पीचेस में सुनते हैं, वो रेटोरिक कहलाता है, बिकॉज मोदी जी वांट द आंसर यस टू दीज क्वेश्चंस। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस मोदी जी करना चाहिए, so that means he wants the same answer, only answer from you is yes। उस क्वेश्चन का मतलब ये कभी मत सोचिएगा कि आपके पास नो का ऑप्शन। so that is a rhetoric, that is the art of the politicians, and Socrates didn't want the youth to become politicians, he wanted youth to think of the benefit of their own selves। Socrates आपको कहीं ना कहीं सेल्फिश बना रहा है। Socrates बोल रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस सीख करो, आप एक्सटर्नल अचीवमेंट सीख मत करो कि अरे मैं पॉलिटिशियन बन गया, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, मैं कैसे किसी को परसुएड करके अपना मतलब निकालूं। नो, सर्च फॉर inner peace, inner happiness, and to know yourself. That is the final goal according to the Delphic inscription, right? So what I have just briefed you in last few minutes is simply about the epistemology. In the epistemology, again I am revising. The first definition is epistemology is the branch of philosophy concerned with the knowledge. Second word is the Socratic problem, which we have discussed in the previous class. And what does it mean? The whole problem was to identify, to arrive at the universal valid knowledge linked and processed through the ethical inquiry. What are the three domains of knowledge in which he was trying to enlighten people? That is the number one, justice, number two, virtue, and number three, eternal ideas. Sir, from which topic of these three the question comes in the examination? Question comes from the virtue aspects only. So where is this knowledge? Knowledge is innate and always there, but it is in dormant state. That is the condition or the state of the knowledge. Where is it physically located? Located in the soul. In the immortality of the soul is the proof that the all the knowledge is immortal and always there, always existing and omnipresent. It is available to everybody. How this knowledge can be awakened? Through inductive and universal validity. What is the distinction between the Socratic and Sophist approach? The distinction is, you all know, one is the perception subjective based, another is the conception rationality based. So what do you mean by wisdom and why it is important? Wisdom, you mean once you have the conception, you will have the wisdom. This universal validity again means wisdom, because once you arrive at this knowledge, you are bound to act on it, not by any external force, on your own. Because once you arrive at any statement or knowledge or argument based on the inductive reasoning, you will be convinced that this is the only truth. And when you are convinced, you will definitely act on it. No force on this earth can move you away from that truth. And once the wisdom comes, the courage comes. That is the common sequence in the human nature. Courage आ जाता है कि नहीं यार अब तो करके दिखाना है. Whatever the challenges are, whatever the pains and hurdles are, doesn't matter, because this is the only truth. Why we are wasting time on the false things? So that's why Socrates says that wisdom leads to intelligent choices and actions. Means once you are becoming wise by the arrival on the universal valid knowledge, you are bound to act. Your choices are bound to become intelligent. You will not be the same person anymore. You will be changed, you will be better, and your choices will be improved, your actions will be changed. And that's why once the action changes, the good actions are called as virtues, and that's why you will become virtuous. क्या बन जाएंगे आप? Virtuous. अब यही चीजें सेम बातें अगर स्टेट के सेंस में मैं अप्लाई करूं, सो ग्रेटर विजडम विल लीड टू more justice oriented decisions. By whom? By the government, by the king, by the persons in authority. They will act according to justice oriented manner, because they will have the greater wisdom. So if the same person who has the wisdom and holds the position of authority also, then he will provide justice to all the people. And justice is the ultimate end, and the most important, it's again a virtue, according to Socrates, according to Plato, according to Aristotle also. They have placed this virtue as the most important aspect, the final aspect, कि whatever we are doing here, अगर आप individually moral principles, आप good virtuous इंसान बनते हैं, तो आप अपने साथ justice करो.
और अगर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं और एक पॉलिटिकल सेटअप में आप एक्ट करते हैं इन अ सर्टेन वे, तो आप दूसरों के साथ जस्टिस करते हैं और अपनी पोस्ट के साथ और अपनी ड्यूटीज के साथ भी जस्टिस करते हैं। तो जस्टिस ओवरऑल एक सबसे बड़ी वैल्यू है, एक सबसे बड़ा वर्च्यू है जिसपे आप फाइनली अराइव करते हैं। सर बहुत सारे वर्ड्स आपने बोल दिए, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनते जाएंगे, चीजें इजी होती जाएंगी। आई विल नॉट ड्रॉप माई स्टैंडर्ड्स टू मीट योर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको सीखना है, राइट? तो मैं चीजों को आसान नहीं बना सकता, मैं चीजों को सही सही आपके सामने रख सकता हूं। वो आसान है कि नहीं है या कठिन है, ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज यू हैव मेक द गोल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, बिकम अ डिप्टी कलेक्टर। बात समझ में आई? मैं चीजों को बस साफ साफ आपके सामने रख सकता हूं, जैसी हैं वैसी दिखा सकता हूं। बात समझ में आ गई आपको? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन स्टेम्स फ्रॉम वंस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और इग्नोरेंस। सीधी सी बात है, अगर आप इग्नोरेंट होंगे, अगर आप इग्नोरेंट होंगे तो आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे। अगर आप इग्नोरेंट नहीं होंगे तो आप एक्शंस, आप विजवाइज होंगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आप इग्नोरेंट होंगे तो लेस वाइज डिसीजंस ले पाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? राइट, इट्स ऑल अबाउट द विजडम एंड द इंटेलिजेंस, दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट द विजडम एंड द इंटेलिजेंस। क्लियर? चल, so more wisdom brings greater awareness of ignorance, and that's why Socrates said only thing I know is that I know nothing. तो उन्होंने ये बोला कि जब मैं ज्यादा वाइज होता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि अरे मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता, and there are so many things to learn, and that's why my ego sheds. जैसे ईगो शेड होता है, ईगो का खत्म होता है, वैसे रियलाइज होता है अरे देयर आर इनन्यूमरेबल एंड इनफाइनाइट थिंग्स टू नो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जिस ईगो में मैं घूम रहा था कि आई नो सो मेनी थिंग्स, वो ईगो और वो उससे कनेक्टेड नॉलेज तो कुछ भी नहीं है इस पूरे एग्जिस्टेंस के सामने। एंड दैट्स व्हाई मोर द विजडम, मोर द अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस, and that's why I said that only thing I know is that I know nothing. Clear? So this is the epistemology of, this is the epistemology of what? Socrates. ठीक है? So that is the first thing we have discussed. Now we are moving towards the second topic of the day, which is Socratic method. हमने बात की थी कि सर सॉक्रेटिक जो इंक्वायरी है वो एथिकल है। वो एथिकल इस सेंस में है कि आप जो टॉपिक को, गोल को चेस कर रहे हैं, वो गोल वेलबींग ऑफ द ह्यूमंस है, वेलबींग ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट्स है, वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स है। तो वो इंक्वायरी एथिकल इस इन कैरेक्टर है, नॉट इन प्रोसेस। ध्यान देंगे, दो वर्ड्स हो गए यहाँ पे। मैं बार बार पिछले सारे शब्दों को यूज करता हूँ, वर्ड्स को यूज करता हूँ, सो डेट आप में क्लैरिटी बढ़े। सर अभी आपने बोला था कि इंक्वायरी एथिकल है, एथिकल इसीलिए है, वो कैरेक्टर में एथिकल है, because the goal is the well-being of the masses. ये गोल है, तो गोल एक गुड इंटेंशन का है, इसीलिए इंक्वायरी कैरेक्टर में एथिकल है। बिकॉज एथिक्स की मीनिंग ही क्या है? टू लिस्ट आउट व्हाट इज गुड फॉर यू with a well reasoned argument. That is the definition of ethics. And what is ethics and morality? Connection between ethics and morality: ethics equals to morality plus rationality. तो अगर मैं रीजनड वे में गुडनेस को सर्च करता हूं तो अल्टीमेटली मैं किसको सर्च कर रहा हूं? एथिक्स को सर्च कर रहा हूं। एंड that's why this whole inquiry of Socrates is called as ethical in nature, बिकॉज उस टाइम पे लेकिन ऐसा कोई वर्ड था नहीं कि लोग ग्रीस में लोग आपस में ये डिस्कस करते थे यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। उस समय कोई ये सब बातें नहीं करता था। कोई एक चीज होती थी, द गुडनेस, दैट्स इट। दीज वर्ड्स वी आर इन्वेंटेड लेटर ऑन, राइट? एंड इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट किया कि जब एक इंडिविजुअल होता है और वो अपने बारे में सही गलत और अपने इंडिविजुअल लेवल पे सही गलत डिसाइड करता है तो हम उसे मॉरल बोल देते हैं, मॉरल प्रिंसिपल। लेकिन जब एक वही इंडिविजुअल एक सोशल सेटअप का पार्ट बन जाता है, वेदर किसी ग्रुप का पार्ट बन जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाए, और वहां पे फिर जो राइट एंड रॉन्ग डिसीजन होते हैं फिर वो रीजन के बेस पे होते हैं।
क्योंकि आपको यूनिवर्सल वैलिड राइट एंड रॉन्ग निकालने पड़ेंगे। यूनिवर्सल वैलिड मींस एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? रीजन। और रीजनिंग के कारण जो हम राइट एंड रॉन्ग पे अराइव होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? एथिक्स। और इसीलिए जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, मोरालिटी एथिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। This is the biggest definition and biggest difference in the concept which I have just told you in a layman manner. How to write these is a different concept. We will discuss that in a different unit. बट इतनी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है कि आज के बाद आप मोरालिटी और एथिक्स के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं। ट्रू। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज सॉक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। What does it say? It is based on dialogue involving personal investigation and reasoned argument. तो हमें कोई नई बात तो नहीं बताई जा रही। We all know that it is a personal investigation. क्यों? कैसी रीजनिंग होने वाली है ये? इंडक्टिव। हर इंसान से पूछा जाएगा, हर बच्चे से बोला जाएगा कि आप से हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप उसका एक आंसर सोचेंगे। तो ये आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बनता जाएगा। आंसर आपको खुद ढूंढना है। आप आंसर दीजिए, अगेन आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन and I will just keep filtering your knowledge, and finally you will arrive at the crux of the whole matter. Are these arguments reasoned? Yes, they are well reasoned through inductive reasoning. Is this investigation personal? Yes, because every individual has to think for their own betterment. कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई आपका बगल वाला दोस्त आपके लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो आपकी वेलबींग की सोचे। आप अपनी वेलबींग के लिए सोचने वाले हो, इसलिए ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सर ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सब्जेक्ट्स लाइक नॉलेज, एथिक्स, जस्टिस एंड वर्च्यू। तो ये तीन किसकी सब कैटेगरीज हैं? नॉलेज की सब कैटेगरी। तो सबसे पहले दिन जब सॉक्रेटिस के पास कोई बैठने आता था, तो वो बोलते थे कि पहले तो ये समझते हैं कि नॉलेज क्या है। राइट, मींस एपिस्टेमोलॉजी से शुरू करते थे। फिर बोलते थे कि अब जो हमें समझना है, पहले नॉलेज तो हमने डिफाइन कर दिया, नाउ वी विल एंटर इनटू व्हाट आर माय डोमेन्स इन व्हिच आई नीड टू क्वेश्चन और डू द रीजनिंग। तब कहानी शुरू होती थी एथिक्स, जस्टिस और वर्च्यू। इज इट क्लियर? राइट, चलिए। तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस सॉक्रेटिक मेथड? इस मेथड में क्या होने वाला है? डायलॉग होने वाला है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, रीजनड आर्ग्यूमेंट होने वाला है। व्हाट इज इट द एम? एम तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, टू नो दाई सेल्फ। कहां से ये इंस्पायर हुए थे? डेल्फिक इंस्क्रिप्शन से। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्फिक इंस्क्रिप्शन? फ्रॉम वेयर वाज सॉक्रेटिस इंस्पायर्ड? 2 marker question. Answer would be Delphic inscription where it was written, know yourself. Right? In the Upanishads also it is written, know thyself. Tattvamasi, you are that. What? Brahm. Something like that. So what are the Mahavakyas mentioned in the Upanishads are the same thing which was mentioned in the Delphic inscription, from where Socrates got inspired. Clear ho gaya? Very good. Now, what is dialectic method? We need to define next. Dialectic method, this method is called as a dialectic because it involves asking questions and let the learners arrive at their own understanding. Dialectic means dialogue. Both are involved, the questioner and the learner, the teacher, mentor and the learner. The learner will think and arrive at their own understanding. We are not going to impose my findings, my understanding on the other's understanding, because understandings cannot be transferred. Understand that the wisdom cannot be transferred. We can make you read the wise words, but that doesn't mean you will become wiser by reading the wisdom of others.
राइट, आई होप अगर आपने फैमिली मैन देखा है तो उसमें एक सीजन में दे गो टू द काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर के पास। तो उसमें एक लाइन बोली जाती है, यू कैन नॉट बिकम वाइज बाय लिसनिंग और रीडिंग अनदर पर्सन्स विजडम। दिस इज वेरी ट्रू लाइन। Until and unless you arrive at the wisdom on yourself by your own hard work and labor, by reasoning, by experiences, it is not at all possible. So dialectic method में जो सॉक्रेटिस हैं वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाना चाहते हैं। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड लेट द लर्नर्स अराइव देयर ओवर अंडरस्टैंडिंग। इट्स द आर्ट ऑफ कंसाइज क्वेश्चनिंग दैट लीड्स टू प्रिसाइज एंड मिनिमल वर्ड आंसर्स। जब हम सवाल छोटे रखते हैं तो आंसर बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल डीप होते जाएंगे, क्वेश्चंस इंडक्टिव से नेक्स्ट लेवल जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आंसर नैरो डाउन होता जाएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग। So concise questioning, specific questioning leads to precise and minimal word answers. Why this method is called, sir, midwifery? I have seen this word written here on the heading. Why this is called as midwifery method? Because this process is like providing the environment and the medium to help you in the birth of wisdom. कहने का मतलब, मैं आपकी ओवरऑल विजडम का जो सीड है उसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं प्लांट में, यानी बेसिकली आई एम गिविंग बर्थ टू विजडम। That's why the midwifery method, it is because it is intended to stimulate the birth of true ideas within others' minds. I am letting you give birth to the new ideas in your own mind, not in my mind or my body. And that's why I am acting as a medium. I am acting as a lubricant. I am acting as a support system. I am acting as a midwife. जो दाई माँ होती हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम मदद करती हैं डिलीवरी में, मैं उनकी तरह काम कर रहा हूं आपके माइंड के साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में। इसलिए मैं एक मिडवाइफ की तरह हूं, इसलिए मेरी जो मेथड है वो मिडवाइफरी मेथड है। दिस इज द होल मीनिंग, एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट। क्लियर? सो मिडवाइफरी मेथड ध्यान रखेंगे, डायलेक्टिक मेथड ध्यान रखेंगे, बोथ आर द सेम थिंग्स, but midwifery is all about how you execute and what is its impact, what kind of significance it plays, and dialectic is all about the raw process. What is the purpose of this dialectic method? The purpose is not speculative but geared towards real reasoned thinking and the practical right action. अगर एंड में आप सोक्रेटिस से शाम को ये पूछेंगे कि गुरुजी पूरी मेहनत आपने करा दी, अब ये बता दो करना क्या है, सोक्रेटिस बोले यही तो मैं नहीं बताना चाहता था, और ये मैं बताने के लिए बैठा भी नहीं हूं कि आपको करना क्या है, मैं ये तो आप खुद अराइव करेंगे इस कंक्लूजन पे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है, राइट? इट इज नॉट मी, बिकॉज अगर मैंने आपको बता दिया तो मेरे में और सोफिस्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा? नथिंग, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक मेथड। तो क्या लिखेंगे एग्जाम में, फिर से बता दे रहा हूं, आप लिखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड लेट द लर्नर्स अराइव एट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, और साथ में आप लिखेंगे इट इज अ मिडवाइफरी प्रोसेस बिकॉज इट इज इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द बर्थ एंड द ट्रू आइडियाज विद इन द अदर्स माइंड्स, एंड इट्स पर्पस इज द रीजन थिंकिंग, एंड व्हाई? बिकॉज दे वांट टू अराइव एट द प्रैक्टिकल राइट एक्शन। स्क्रीन पे जो आपको बोल्ड दिख रहा है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, वो आपके नोट्स में होना चाहिए, वो आपकी आंसर राइटिंग में भी होना चाहिए। जो कीवर्ड्स लिखे गए हैं जैसे मिडवाइफरी, पर्पस, डायलेक्टिक, वो भी आपकी कॉपी में एज इट इज होना चाहिए। विदाउट कीवर्ड्स योर आंसर्स आर नॉट गोइंग टू गेट इवैल्यूएटेड, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कोई एग्जामिनर इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि आपके आंसर पढ़े, उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए तभी उसका अटेंशन जाएगा, तभी वो पढ़ेगा, क्योंकि दूसरे आपसे बेहतर लिख रहे हैं, उन्हीं की इंटरव्यू कॉल आएगी, आपकी नहीं आएगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। Next, what does it involve? It involves asking and clarifying questions, encouraging learners to arrive at their own understanding. Question हो सकता है 2 मार्कर में कि what are the constituents of dialectic method? दो constituent हैं। पहला, एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लैरिफाई किया जाता है, उसके बाद लर्नर्स को एंगेज किया जाता है और एनकरेज किया जाता है टू अराइव एट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वेरी गुड।
Sir, what is the source behind learning about the Socratic method? There is only main source of Socratic dialogue. कौन सी है वो main source? वो main source का नाम है Plato's Republic. इसी में मिलेगा, because we all know that Socrates never tried to write down everything. लिखते वो हैं जो वाइज नहीं हो पाते, तो उन्हें लगता है कि अब जो सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम लिख ही लेते हैं। क्या पता अगले जन्म में या हो सकता है लाइफ के किसी एंड में समझ में आ जाए। लेकिन प्लेटो खुद सोक्रेटिस खुद वाइज होते जा रहे थे बेस्ड ऑन रीजन आर्ग्यूमेंट, तो उन्हें पता होता था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ। तो अब जब मैं उस रास्ते चल ही रहा हूँ तो अब मुझे उसको लिखने की क्या जरूरत, मैं दूसरों को भी उस रास्ते चलवा सकता हूँ, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जा सकता हूँ और मिडवाइफरी की तरह उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूँ। तो उनको लिखने की कोई वैल्यू फील ही नहीं हुई। Why would he waste his time in writing the text? लेकिन प्लेटो जब सब समझ गए तो प्लेटो को रियलाइज हुआ कि ये छोटी मोटी बात नहीं है जो मेरे गुरु ने कही, ये वो इसका इम्पैक्ट पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे है और इससे हम नया सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ही रोट द प्लेटो रोट द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने एक नए पूरे सिस्टम का एक पूरा कंसीव किया, एक आइडिया लिखा और उसको पूरा नोट डाउन किया। जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिको इकोनॉमी सिस्टम, राइट, और फिर उसको इंप्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसी तरह से प्लेटो ने रिपब्लिक में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाया और उसका एक पूरा थॉट प्रोसेस दिया ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजीज ऑफ हिज मास्टर सोक्रेटिस। लेकिन it's very unfortunate that the Chanakya got the opportunity to apply all his ideas with the help of the Chandragupta in the Magadhan Mahajanpada, right? But Plato never got this opportunity, and that's why he was basically moved out of the Athens. उसे वहां से बाहर निकाला गया, थ्रोन आउट ऑफ द एथेंस, कि भाई तुम्हारी यहाँ पे फिलॉसफी नहीं चलेगी। तो सम ऑफ द नियर बाय ग्रीक स्टेट्स, राइट, एंड दे एक्सेप्टेड प्लेटो कि चलिए आप यहाँ आइए, हम आपका सिस्टम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बट अगेन इट वाज नॉट, इट वाज सक्सेसफुल, क्योंकि प्लेटो एक यूटोपियन आइडिया लेके गए थे विच वाज नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर द ग्राउंड रियलिटी, और इसलिए वो आइडिया फेल हो गया। इसलिए बोला जाता है प्लेटो वाज द यूटोपियन एंड एरिस्टोटल इज द प्रैग्मेटिस्ट। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है और कई बार पूछा जाता है कि व्हाई प्लेटोज आइडियाज वे आर यूटोपियन और आइडियलिस्ट। बट सोक्रेटिस को यूटोपिया और प्रैग्मेटिज्म से मतलब ही नहीं था, बिकॉज सोक्रेटिस का होल पर्पस था कि इंडिविजुअल से कि ये बताना कि भाई आप अपना बेटरमेंट सीख करो, छोड़ो बाकी चीजें। और अगर ये हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज, अपने काम और अपना बेटरमेंट की तरफ सोचेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी में जस्टिस क्या हो जाएगा, परमिएट हो जाएगा टू ईच एंड एवरी लेवल। So the truth is that Socrates wrote nothing and refused to call himself a teacher, yet earned admiration and a wide circle of followers. So he was never trying to call himself a teacher or projecting himself like a teacher. So this is very, very important point for all of you to understand. What was the impact of the approach of Socrates? The impact is that the critically examined political structure to advance justice. He just examined the complete structure and what should be the ideal political system, so that all the individuals can seek their own happiness and they can like advance justice from wherever authoritative positions they are placed. It encouraged the youth to question authority and leading to the charges of corruption. Right? So whenever he inspired the youth to question the authority, so this led to the charges of corruption to Socrates. Socrates को बोला गया कि तुम लोगों के माइंड को करप्ट कर रहे हो, इसलिए यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट, तुम भड़का रहे हो उनको, तुम इंस्टिगेट कर रहे हो सिस्टम के खिलाफ। वो अच्छे खासे ओबीडियंट सिटीजन थे, नो बडी वॉज क्वेश्चनिंग अस, नो बडी वॉज क्वेश्चनिंग अवर रेटोरिक, बट यू आर मेकिंग देम think for themselves and questioning us, which is that act of sedition against the state, and you will be charged for this corruption and sedition. And that's why he was executed for challenging the societal norms. He believed in the divine mission to acquire truth through inquiry. ये तो उनका belief था. He recognized one supreme God conflicting with traditional Greek beliefs with multiple gods, and he viewed by the authority as subversive and a threat to accepted ideologies. And that's why the state charged him for this overall act, and that's why he was given the hemlock poison at the end of his life in the prison. And he gracefully and peacefully accepted that, because Socrates ने ये बोला
कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे डेथ सेंटेंस दे दो, हेमलॉक पॉइजन दे दो, क्योंकि मुझे जहां पहुंचना था मैं ऑलरेडी इंटरनली पहुंच चुका हूं. इफ दिस बॉडी डजंट सर्वाइव from now onwards or later on, it doesn't matter to me, because this is my last birth and I have achieved that state of happiness, and I have rekindled or recalled all the knowledge which I must have recalled. Right? So basically, he considered himself as kind of enlightened being, but he never used this word. Right? But as a wisdom, he arrived at a state of mind, and he said in his last moments that I just want to feel this moment of drinking the poison. Because some of his friends came to him and asked, please apologize to the king, please apologize to the system, and they will leave you. राइट लेकिन उसने बोला कि मुझे कुछ करने के लिए बाकी ही नहीं है अब काम, and even I just want to feel and observe the death also, that is my last goal. So this process is going to again help me to become wiser. So that's why he drank that hemlock of poison and experienced the death. And when you are ready to face the death, that means you have overcome the death. And that is the whole philosophy and whole end of his life was like that. Right? So this is the complete process of dialectic method, and second one was the midwifery method. A 7-marker question is expected in your exam regarding what is the difference between the sophist and the Socrates. So this difference I have already told you, but I will just brief in a very short span of time with the help of the table. You can take this, you can get these notes, you can ask in the WhatsApp number जो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ 9953733830. So what is the goal of philosophy of Socrates? Pursuit of truth, wisdom and virtue. And what was the goal of philosophy of Sophists? Mastery of rhetoric, persuasion and success, success oriented. View on truth क्या था? It is believed in the objective, universal, valid truth. यहाँ पे advocated relativism. Truth is subjective, contextual, held relativistic views on truth and morality. आपका सच अलग है, आपकी morality अलग होनी चाहिए, आपकी success की definition अलग होनी चाहिए. It is very individualistic and subjective. It is not universally valid truth. टीचिंग मेथड क्या थी? यहाँ पे डायलॉग होता था, क्वेश्चनिंग होता था, इंट्रोस्पेक्शन था, डायलेक्टिक मेथड, मिडवाइफरी मेथड, एंड यहाँ पे है रेटोरिकल ट्रेनिंग. ये 2 मार्कर में आ सकता है. व्हाट डज इट मीन? रेटोरिकल ट्रेनिंग मींस स्पीचेस, डिबेट टेक्निक्स, आर्ट ऑफ इफेक्टिव ऑरेटरी, एंड बिलीव दैट मास्टरिंग दिस स्किल वाज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन पब्लिक लाइफ एंड लीगल मैटर्स. जैसा कि आपने देखा है कि एडवोकेट्स किस तरह से क्या हियरिंग्स होती हैं जब, तो किस तरह से आर्गुमेंट करते हैं, जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई एंड टर्न द केस इन देयर फेवर. तो दैट इज द रेटोरिक. What is the approach to morality? Morality is universal, discoverable through reason. यहाँ पे morality is relative and individualistic and related to cultural norms. यहाँ पे reason की कोई value नहीं है. Attitude towards service में क्या बोलते हैं Socrates? He did not charge for teaching, saw it as a divine mission. And यहाँ पे sophists जो होते थे वो as a tuition charge करते थे. I said तो sophists were the intellectual nomads of that time. घूम घूम के अलग अलग सिटी जाते थे, अपने टैलेंट को सेल करते थे, लोगों को सिखाते थे, ट्रेन करते थे और उसका फीस लेते थे. So they viewed teaching as a profession. Focus of inquiry यहाँ पे ethical है, यहाँ पे practical skill है for public life. Legacy seen as the father of Western philosophy, यहाँ पे contributed to rhetoric, skepticism and education system. Criticism of each other, criticized sophists for manipulation and lack of concern for truth, and sophists criticized Socrates as the impractical and overly abstract. What do you mean by this universal valid knowledge? There is no universal valid knowledge. This is very abstract idea. So that's how sophists used to criticize the Socrates and his approach. So this table is very, very important. You can just note it down from this video, है ना, या फिर आपको फाइल चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए तो आप मांग लीजिएगा. आई विल शेयर द स्लाइड. और ये जो डिफरेंस है ये अपने आप में एक 7 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है. With that, we have also covered what is dialectic method and what is midwifery method. That was our target today. Along with that, our target was to complete the Socratic epistemology that I covered in the first half of this lecture. You can just view it. If you don't understand, again and again आप एक दो बार और सुन लीजिए. अगर उसके बाद भी आपको डाउट आता है तो you can always connect with me at our number which I have just mentioned.
Epistemology is a branch of philosophy concerned with knowledge. We have discussed all the sections or the divisions of knowledge with which Socrates was concerned, how he defined each term, what is perception, what is conception, what is universal reality, what is inductive reasoning, what is immortality of the soul, what is wisdom, what is justice, virtue, and eternal ideas. So the two lectures which we have covered on Socrates provides a final base. Now we will enter into the final topic, that is Socratic ethics, in the next class, and we will see how the question can be answered which is coming from the for the mains examination, like virtue is knowledge in 11 marker as well as 2 marker. ठीक है, तो वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस क्लास में यहाँ मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस क्लास, एंड आई होप few things I have made it clear through my effort of making you understand this very complex thing, complex topic in a very easy and lucid manner. Still, if you are facing any kind of hurdle, you can always get in touch with me. एंड थोड़ा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सभी के लिए नया टॉपिक है, राइट? सो डोंट फील दैट यू आर नॉट एबल टू कवर अप द थिंग्स। आपको भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ 10, 20, 30, 40, 40, 50 डेज के बाद आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे रेगुलरली, तो आप थिंकर्स में इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप कहीं पर भी बैठ के कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, यस आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग द टर्मिनोलॉजी एंड वोकैबुलरी एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंकर। सर दैट्स इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड always aim for the highest goal। आप सबसे मैं यही बोलूंगा, right? And always try to become the topper, make it as your goal, and सारा एफर्ट जो है अपने आप को टॉपर बनाने में लगा दीजिए। सारी जगह से अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करिए, जहां वेस्ट हो रही है वहां से प्रोटेक्ट करिए, और अपनी एनर्जी को सिर्फ टॉपर बनने में और डिप्टी कलेक्टर बनने में लगाइए, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी फॉर एवर, एंड नॉट फॉर जस्ट फॉर यू, ऑल्सो फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस। So it's a very tough exam, I know that, but so many things are at stake, I understand that, but the rewards are leaps and bounds। जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो उससे बहुत ज्यादा है, जिसकी आप इमेजिनेशन या कल्पना भी नहीं कर सकते। सो ऑलवेज कीप दीज वर्ड्स ऑफ माइन इन योर डे टू डे रूटीन, कि आपको पढ़ना है, और जितना भी एफर्ट आप लगाएं, हमेशा याद रखना कि आपके एफर्ट उससे 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड्स देंगे, ये सोच के हमेशा आप पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, जय हिंद।